Now, this is class 12th and this is chapter number 2, solution. So this chapter is related with first chapter of mole concept. आपका था ना कि 11th में some basic concept of we can say that physical chemistry mole concept. तो वहाँ पे जो चैप्टर खत्म होता है 11th का चैप्टर नंबर 1, वहीं से ये सॉल्यूशन वाला चैप्टर स्टार्ट होता है. क्लियर? तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन मीन्स it is related with respect to two, either we can say it same or different type of means material with each other, either we can say it in same proportion or different proportion. Here in case of solution here में different type of things are given, वो हम लोग यहाँ पे discuss करेंगे. Clear? So now the most of these are mixture containing two or more pure substance. So most of these are mixture containing two or more pure substance. Their utility or importance in life depends on their composition. मतलब आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन वो कहाँ पे यूज होगा, कहाँ पे नहीं होगा, इट इज रिलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स कंपोजिशन. फॉर एग्जाम्पल देखो, द प्रॉपर्टी यहाँ पे ब्रास दिया है, ब्रास. तो ब्रास इज मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक. ब्रास इज मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक and are quite different from those of German silver. So what is German silver? It is mixture of copper, zinc and nickel. Or bronze. Bronze में क्या आता है? Copper and tin will be there. Clear? Here brass, German silver and bronze will come. 1 parts per million मतलब ppm of fluoride ion in water prevents tooth decay. 1 ppm of fluoride ion in water prevents tooth decay, while 1.5 ppm causes the tooth to become mottled, and high concentration of fluoride ion can be poisonous also. मतलब on the basis of we can say that percentage or on the basis of amount of fluoride, its effect will be decided on human body. Clear? For example, sodium fluoride is used as rat poison. Sodium fluoride is used in rat poison. Intravenous injection are always dissolved in water containing salt at particular ionic concentration that match with blood plasma concentration and so on. Clear? तो जितना मैंने बताया this is important for 1 marks. In case of solution क्या हो जाएगा? तो most of these are mixture containing two or more, है ना, pure substance. Their utility or importance in life depends on their composition. For example, brass, German silver, they are example of we can say that alloy. Brass है ना, German silver, तो these are again means example of alloy. यहाँ पे देखो फ्लोराइड दिया हुआ है, तो फ्लोराइड के इफेक्ट पे देखो यहाँ पे सब दिया हुआ है. क्लियर? सोडियम फ्लोराइड है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाए? इंट्रावेनस इंजेक्शन. तो सी इट मींस यूज ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन इट्स कंपोजिशन. use of solution depends upon its composition. In this particular chapter, whenever we will discuss, so here what will happen? So first of all definition, classification, then after unit with formula, and then here means Henry's law, Raoult's law, vapor pressure, colligative property, normal, abnormal. So that type of thing we will discuss here. Clear? तो जैसे कि देखो चैप्टर नंबर 1 11th स्टैंडर्ड में आपको बताया हुआ है. क्लियर हुआ? चैप्टर नंबर 1 11th स्टैंडर्ड में वही जहां से वो स्टॉप होता है ना, वहीं से ये टॉपिक आपका स्टार्ट होगा. क्लियर हुआ कि नहीं? देखो जैसे ही मैंने सॉल्यूशन बोला, तो दिस वन इज सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. यदि मैं अमाउंट की बात करूं तो solute will be less and solvent will be more. यदि मैं फेस की बात करूं, फेस तो solid liquid gas and this one is again solid liquid gas.
On the basis of amount, solute will be less, solvent will be more. फेज मतलब सॉलिड लिक्विड गैस. अब ना सॉल्यूट यदि सॉलिड है तो इसमें भी सॉलिड लिक्विड एंड गैस. In this way, three different type of solution will come. यदि liquid है, solid, liquid, gas, again three different type of solution will come. A gas है, solid, liquid and gas, again three different type of solution will come. In this way, 9 different type of solution will come. In this way, 9 different type of solution will come. Now, after formation of solution, phase of solution depends upon phase of solvent. Phase of solution मतलब आपने मिक्स तो कर दिया बट आपका सॉल्यूशन दिखेगा कैसा. तो phase of solution depends upon phase of solvent. Clear? Here some examples are given. So now types of solution. The solutions are homogeneous. Solutions are homogeneous mixture of two or more than two component. The largest component in solution is known as solvent. मैंने अभी बताया आपको. Largest component in solution is known as solvent. Solvent determine the physical state in which solution exists. मतलब solution आपका solid है, liquid है, gas है. Related with respect to type of solvent. One or more component present in the solution other than solvent are known as solute. This is normally known as solute. Here we shall consider only binary solution. Binary का मतलब consisting of two component. Here each component may be either solid, liquid or gas. So what is meaning of homogeneous mixture? So homogeneous mixtures we mean that its composition and property are uniform throughout the mixture. Homogeneous में क्या होगा? Homogeneous mixture we mean that its composition and property are uniform throughout the mixture. Clear? तो चलो ये मैंने 9 type of solution बताया. तो here phase of solution depends upon phase of solvent. Phase of solution depends upon phase of solvent, while quality of solution depends upon amount of solute. Quality of solution depends upon amount of solute, and phase of solution depends upon phase of solvent. चलो type of solution gas है, इसका मतलब solvent क्या होगा? gas. तो solute यदि gas है तो ये एग्जांपल में भी मिक्सचर ऑफ O2 and N2 है ना. solute gas, solvent gas तो मिक्सचर ऑफ O2 and N2. solute liquid, solvent gas तो chloroform mixed with nitrogen. solute is solid gas तो camphor in nitrogen. So these examples are important for 1 marks. Similarly, liquid solution. So this is gas, liquid, O2 dissolved in water. Liquid, ethanol dissolved in water. Solid, liquid, so glucose dissolved in water. So these are 3 examples. Now this is solid, so gas in solid, liquid in solid, solid in solid. So solution of H2 in palladium. Amalgam of mercury with Na and copper dissolved in gold. In this way, 9 different type of solution will come. In this way, here we can say that 9 different type of solution will come. Now, here quality can be decided on the basis of amount of solute particle. In case of amount of solute particle, here we will discuss different type of concentration unit. Here we will discuss different type of concentration unit. क्लियर हुआ? जैसे देखो अभी ये सॉल्यूट है तो सॉल्यूट में क्या करना है आपको? हियर वी विल डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन यूनिट जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है. मतलब ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ये हियर ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट तो 3 कैटेगरी विल बी देयर. अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विल बी maximum, amount of solute will be medium, and amount of solute will be minimum. तो
So whenever amount of solute will be maximum, so here we are using percentage. Clear? Here see percentage weight by weight. Here percentage weight by volume. Here percentage volume by volume. And then after percentage volume by weight will be there. Now in case of medium, here capital M. So this is molarity. Capital N. So this one is normality. Capital F. So this one is formality. And small m. So this one is molality. And chi. So this one will be mole fraction. Clear? If amount of solid particle will be medium, so these conditions are there. And in case of minimum, here ppm, ppb, and then after ppt will come. Clear? In terms of accuracy, accuracy. So here accuracy will be maximum. Here accuracy will be medium level, and here we can say that accuracy will be minimum. तो यहाँ पे ही 4 plus 5 9 and ये 10 12. तो 12 different type of concentration unit will come. But out of this 12, देखो काफी कुछ तो 11th में आ गया है. तो अभी हम लोग को कौन कौन सा डिस्कस करना है यहाँ पे? सी here percentage weight by weight, ये अभी 12th में डिस्कस करना है. वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ठीक है. उसके बाद आपका मास बाई वॉल्यूम, इधर से इतना. देन इधर पे mole fraction, we will discuss here this mole fraction, and then after molarity, and then after molarity here molality will be there. Clear? molality इतना अभी डिस्कस करना है, और बाकी के जो चीजें हैं वो सब आपको इसमें 11th में आ गई है. Clear? So here we will discuss now definition, formula and example of which type of concentration unit. Here percentage weight by weight, percentage volume by weight by volume, percentage volume by volume, and then molarity, molality and mole fraction. Now in expressing concentration of solution, है ना, expressing concentration of solution, तो मैंने आपको बोला था कि see total 12 different type of concentration units are there. Clear? तो here composition of solution can be described by expressing its concentration. Composition of solution can be described by expressing its concentration. The latter can be expressed either qualitatively or quantitatively. It can be again expressed either qualitatively or quantitatively. Qualitatively, we can say that qualitatively we can say that the solution is dilute, that is relatively small quantity of solute, or it is concentrated, that is relatively very large quantity of solute. But in real life this kind of description can add to lot of confusion, thus the need for quantitative description of solution. So there are several ways by which we can describe the concentration of solution quantitatively. Clear हुआ? See, कभी हम लोग बोलते हैं ना कि amount of solute is less or more, तो उससे पता नहीं चलता है. तो here means too much confusion will be there. तो मैंने आपको बोला था on the basis of amount of solute, here we can say that here how many unit? तो 12 total units are there. Clear? In which mathematical data are required. तो देखो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा है? परसेंटेज वेट बाई वेट. तो परसेंटेज वेट बाई वेट में आपको क्या करना है? इन केस ऑफ परसेंटेज वेट बाई वेट फॉर्मूला क्या है? तो मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन. सी कंपोनेंट इज मेन. मास ऑफ द कंपोनेंट मतलब इट मे बी आइदर वी कैन से दैट सॉल्यूट और सॉल्वेंट, एंड टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. तो सॉल्यूट कौन है? ग्लूकोज. सॉल्वेंट कौन है? वाटर. 10% वेट बाय वेट, तो ग्लूकोज 10 है,
और ये क्या है 90। मतलब ऊपर आपको क्या करने का, वेट बाय वेट लेना है। तो कंपोनेंट मतलब यदि सॉल्यूट का हो तो ऊपर 10, नीचे आपका 100। क्लियर? तो सी, कंसंट्रेशन डिस्क्राइब बाय मास परसेंटेज इज कॉमनली यूज इन इंडस्ट्रियल, क्लियर, इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशन. For example, commercial bleaching solution contain 3.62 mass percent of sodium hypochlorite in water. Commercial bleaching solution contain, ये है ना 1 mass के लिए, 3.62 mass percent of sodium hypochlorite in water. तो this is first information. Clear हुआ कि नहीं? Now second आता है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. तो वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. देख जब जब कंपोनेंट आए ना तो या तो सॉल्यूट होगा या तो सॉल्वेंट होगा. क्लियर? सिमिलरली वेट बाय वॉल्यूम, अनदर यूनिट व्हिच इज कॉमनली यूज्ड इन मेडिसिन. हियर मेडिसिन एंड फार्मेसी याद रखना इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. इट इज मास ऑफ सॉल्यूट dissolved in 100 ml of the solution. This is mass of solute dissolved in 100 ml of the solution. देखो आपको मैं सिंपल बताऊं कि जैसे परसेंटेज वेट बाय वेट है तो आपको क्या करना है, सी जैसे ये है तो दिस वन इज सॉल्यूट एंड दिस वन इज सॉल्यूशन. तो वेट का जो यूनिट होता है 11 में बताया था ग्राम और वॉल्यूम का यूनिट होता है लीटर. क्लियर? समझ में आया कि नहीं? तब देखो यहाँ पे जैसे सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. ये लिखा परसेंटेज वेट बाय वेट. इसका मतलब न्यूमरेटर में सॉल्यूट आएगा और डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन आता है. यदि वेट हो तो ग्राम लेने का, वॉल्यूम हो तो लीटर लेने का. इन दिस वे वी कैन रिमेंबर, है ना, फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड देन आफ्टर वेट बाय वॉल्यूम. न्यूमेरिकल आएगा तो और डिटेल में बताएंगे. अब आता है पीपीएम. तो पीपीएम मतलब नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट. क्लियर? नीचे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट सॉल्यूशन इनटू 10 पावर 6. सीधा आपको फॉर्मूला याद है. तो एक्चुअली ये कहाँ पे आता है, क्वाड्रेटिक इंडस्ट्री में यूज होता है. क्लियर हुआ कि नहीं? फिर आता है मोल फ्रैक्शन. तो नाउ वी विल डिस्कस हियर, वी कैन से दैट मोल फ्रैक्शन. तो मोल फ्रैक्शन का मतलब कैसा होता है, हियर सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन मतलब सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट. तो दिस इज ए एंड दिस इज बी. तो ये n क्या आ जाएगा, n इज मोल, chi इज मोल फ्रैक्शन, chi इज मोल फ्रैक्शन. ये n Na है, Nb है, ये chi है, chi A प्लस chi B. तो व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ chi A? तो chi A इज इक्वल टू Na, Na प्लस Nb, chi B, Nb, Na plus Nb. So whenever we are putting value of chi and chi B, Na plus Nb, Nb, Na plus Nb, Nb, Na plus Nb is equal to 1. इसका मतलब chi A plus chi B is equal to 1. मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन विल बी 1. ठीक है, यहाँ दिया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल देखो बाइनरी मिक्सचर. इन केस ऑफ बाइनरी मिक्सचर, if the number of moles of A and B are Na and Nb respectively, then mole fraction of A, chi A is equal to Na upon में Na plus Nb. For a solution containing I number of component, यदि I component है तो I कितने भी हो सकते हैं, 2, 3, 4, 10 कितने भी. तो chi I is equal to Ni upon N1 plus N2 Ni, ये आ गया. It can be shown that in a given solution sum of all the mole fraction is unity. मतलब maximum value of mole fraction will be taken as a 1. Maximum value of mole fraction will be always taken as a 1. अब आता है molarity. तो moles of solute नीचे volume of solution in liter.
this is moles of solute, नीचे volume of solution in liter, then molality will come. तो mole of solute नीचे आएगा mass of solvent in kilogram. This is unique one. तो mass of solvent in kilogram is there. Clear? So now here is round about 6 different type of concentration unit we had discussed. So these concentration unit have, we can say that it's on advantage as well as disadvantage. Here independent of temperature में कौन कौन आता है? Independent of temperature तो mass percentage, ppm, mole fraction and molality. Here we can say that mass percentage, ppm, mole fraction and molality, and molality is a function of temperature. Clear? So this is because volume depends on temperature and mass does not. मतलब molarity is temperature dependent. And why this type of thing will come? Because volume depends on temperature and mass does not depends upon temperature. Clear हुआ कि नहीं?